Topic 18. A closer look. Living and dying in Mehergarh. First point. Find Mehergarh on map 2, page 13. Second. This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. Third point, Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. Fourth point, it is one of the earliest villages that we know about. Fifth point, at this site many animal bones were found. Sixth point, bones of wild animals such as the deer and pig and also bones of sheep and goat were found. 7 point. Other finds at Mehergarh include remains of square or rectangular houses. Eighth point. Eighth point. Each houses had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. Ninth point. When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. P-A-Y, pay, not play, it's P-A-Y, pay. 10th point, people look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. 11th point, burial is one such arrangement. 12th point, several burial sites have been found in Mehergarh. 13th point, in one instance, the dead person was buried with goat, which were probably meant to serve as food in the next world. मेहर सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। पहला पॉइंट, मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उस प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे प्रलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा।